Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. This is Ms. Sidra Iqbal, visiting teacher of the Department of History and Arts, University of Education, Bank Road campus. This is our second lecture of introduction to for the subject of foreign policy of Pakistan, in which the topic we are going to discuss is introduction to IR. Basically, this is a huge topic, so we divided it into two, like in first lecture 1 and the second is in lecture 2nd. First of all, when we discuss about the introduction to IR, we have to see that, or if we formulate a question for the introduction to IR, we can say that we formulate in that way: discuss the development and significance of IR as a discipline, discuss the nature and scope of IR. Do you think that IR should be interdisciplinary in nature? So here we are going to discuss our first lecture of IR. This is, first of all, we are going to discuss meaning. Now we see what is the meaning of study of relationship and interaction between countries, nature and consequences of such relations. Basically, from the school level, we studied that a state's interrelationship or the interaction between two or more states called the IR. Study of interaction between states called the IR. I hope you can understand. Now the second one is, both are condition facts of international politics, the actual conduct of relations among nations through diplomacy based on foreign policy, cooperation, conflict, and war among them, and field of study to understand and explain nation acts and behavior in international state system. बेसिकली IR पूरा एक फैक्ट भी है और फील्ड ऑफ स्टडी. सो it is a fact of international politics, the nature, conduct of the international relations among states through diplomacy based on their foreign policy, cooperation, conflict and peace among them, and as a field of study it is to understand and explain nations acts and behavior in international system. कोई स्टेट जो है वो क्यों और कैसे बिहेव करता है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में, इसकी जो स्टडी है कॉज ऑफ रिलेशनशिप और टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप्स कॉल्ड द फील्ड ऑफ स्टडी. International relations and politics are generally understood as a set of actions, reactions, and interaction between sovereign states. Sovereign means the states which are independent through the medium of their foreign policies. The second thing is global study of global state system. Now we had need to understand that what is state system. The organization of humankind into sovereign states. Palm and Brink said it is a pattern of political life in which people organized into sovereign states that must manage to get along together in the anarchic world order. For example, this sovereign state mean ऐसे स्टेट जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, ऐसे स्टेट जो अपने नेचर में बिल्कुल सॉवरन हो,
जो स्टेट्स हैं वो जो अपने इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बटे हैं, इनको अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इन अनार्किक स्टेट वर्ल्ड ऑर्डर में, अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर खुद से इंटरेक्ट करना होता है. बेसिकली स्टेट सिस्टम इज़ अ स्टडी ऑफ इवेंट्स, फिनोमेना, इशू, organizations, structure, conflict, and cooperation beyond the boundaries of the nation states. आपके या दूसरे स्टेट के बियॉन्ड जो भी इवेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी स्टेट बाउंड्रीज के बाहर आते हैं, वो बेसिकली आईआर के दायरे में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, study of global conflict, violence and war and cooperation, global trade and business, migration, refugee, terrorism, climate change, energy crisis, hunger and poverty, etc. Now we are discuss the definitions. First of all, Palm and Punk said IR includes many other things beyond interrelationships between states, international organizations and groups. Despite keeping nation state in its center, IR also accommodate various other relationships at upper and lower level of nation states. Stanley Hoffman said, IR is concerned with those elements and events which affect foreign policy and power of those fundamental political units in which the world is divided. Quincy Wright said, IR is not only organized study of relations between states, but also the study of various kinds of group like nation, state, people, alliances, reign, international organization, industrial organizations, religious organizations, etc. Hans Morgenthau, the father of realism, for him, struggle of power among states in international system nothing but IR. स्टेट जो जिस तरह एक दूसरे को डोमिनेट करती है या अपनी पावर, इन अनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर, वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, इससे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो मतलब अगर इंक्रीज हो तो वो वॉर में भी बदल सकता है. इन सब का स्टडी जो है वो IR कहलाता है. और इसके अलावा जो है नॉन स्टेट एक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट या अलग अलग ग्रुप्स के जो इंटरेक्शन होते हैं इंटरनेशनल या ग्लोबल सिस्टम में, जो इफ़ेक्ट करते हैं, इनका फोकस जो है वो IR कहलाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ IR. अब हम देखेंगे कि व्हाट्स टाइप ऑफ नेचर ऑफ IR है. We can understand the difference or scope of methods of IR which prevail in the world. First one is anarchic system. You know, in international arena there is no global government system. So here we are going to discuss the nature of IR. States or nation states are main factor in international state system. स्टेट चाहे छोटे या बड़ा हो, वो सोवरन होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता. बट यूएनओ जो है वो बातचीत करके दो स्टेट्स में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको समझा सकता है, लेकिन वो लीगल अथॉराइज्ड
नहीं की ताकत नहीं रखता, या सॉवरन लीगल इक्वल स्टेट्स जो हैं वो आपस में किस तरह से बिहेव करती हैं इन इंटरनेशनल सिस्टम, दैट कॉल दी आईआर की नेचर इस तरह से है। यूरोसेंट्रिक एंड एथनोसेंट्रिक, वेस्टर्न कल्चर से दुनिया को देखना, इस नज़रिए से जो पर्सपेक्टिव एक मुकम्मल नज़रिया है, इसको हम इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। यूरोप का जो थॉट प्रोसेस है और कल्चरल सिटिंग जो है, इससे पूरी दुनिया को देखना, पूरे नज़रियात को देखना या स्टेट एक्शंस को अपने नज़रियात से देखना, ये यूरोसेंट्रिज्म कहलाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी थ्योरेटिकल। आपको पता है कि वर्ड फिनोमेना को समझने के लिए जो मैटर्स, अदर सब्जेक्ट मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी है आईआर जो है। इसके अलावा जो बिहेवियरलिज्म, कंपेयरिंग स्टेट बिहेवियर टू ह्यूमन नेचर, बेसिकली बिहेवियरिज्म इसको बहुत इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के हर फील्ड के अंदर, जो है वो स्टेट बिहेवियर को मुताबिकत दी जाती है ह्यूमन बिहेवियरिज्म से। जैसे कि फॉर एग्जांपल जंगल में एक अनार्किक ऑर्डर होता है, तो ह्यूमन फेयरफुल मतलब फील करता है, तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए जो पैरामीटर्स और ब्रूटल बिहेवियर अगर अडॉप्ट करता है, तो सेम इसी तरह स्टेट अपने टाइम और हालात के मुताबिकत के से जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए स्टेप लेती है इन एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर, तो ये स्टेट का बिहेवियर होता है। तो दैट्स वाई आईआर, इन नेचर ऑफ आईआर, बिहेवियरलिज्म बेसिकली कंपेयरिंग स्टेट्स बिहेवियर टू ह्यूमन बिहेवियर। Nature of IR, changing nature in contemporary world. In contemporary world, increasing roles of non-state actors, supranational organizations, focus shifting from Europe and North America to Asia and third world countries, focus shifting from interstate war and security to interdependence and cooperation to tackle environment degradation, climate change, terrorism and violence, hunger and poverty, energy, security, epidemic, human rights, etc. If we see the nature of IR in contemporary world, the focuses of the IR is changed. This is changed from Europe and North America to third world countries. Focus are shifted toward the climate change, energy. So scope of IR, basically it's a traditional interaction, cooperation plus conflicts. When both two states interact or cooperate with each other, then there is also created a conflict with them. They interact for the nation interest to achieve their goal. Basically whole scenario is the struggle of power, dependency or interdependency, foreign policy and nation interest evaluate in contemporary world. तो कहने का मतलब ये है कि इन कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पूरे फोकसेस जो हैं वो स्टेट वॉर्स जो होती थी उनसे शिफ्ट, और सिक्योरिटी के सिर्फ जो दो मसले थे इनसे निकल के अब एक ह्यूज लेवल के मसाइल जो हैं वो सामने हैं। वो इन्वायरमेंटल है, वो क्लाइमेट चेंज का है, आफ्टर 9/11 टेररिज्म एंड वायलेंस है, फिर हंगर एंड पॉवर्टी, एनर्जी एंड सिक्योरिटी,
और ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम जो हैं, तो पूरे का पूरा जो आईआर का नेचर है वो कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ आईआर. स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कोऑपरेशनल interactions among states in the international state system, study of process by which state adjust their national interests to those of other states, study of struggle for power and power relationship among states. Again and again, the thing is that the relation between states or the study of fire basically based on the struggle of power among the states. All the foreign policies, terms and conditions formulate on the base of struggle of power. Every state in anarchic state system want to increase their power. Basically, war and peace, security and cooperation, independency and interdependency among states, study of international laws, treaties, conventions, etc. Study and evaluation of foreign policy of state and national interests. These all called the study of IR. Now we are going to discuss the scope of IR in contemporary scope. In contemporary scope, IR is study of international organization in field of political trade, economy, culture, education, religion, regulation, movements. And the other thing is that study of international economic system, free trade, economic liberalization, globalization. The world came into being in a global world, global village. Here is globalization take the states close, but this globalization here gave a number of benefits. At the same time, it increased the conflicts among the state, and it also create a number of problems among the states. Study of non-state actors, civil societies, NGOs, social movements, and social phenomena such as human rights, epidemic, environment issues, terrorism, migration, the problem of refugees, poverty, and hunger, etc. Climate change, human rights, terrorism after 9/11, migration which Pakistan also faced at the time of 1947, and the huge refugees which created newborn Pakistan a lot of problems. In contemporary international relations, embrace the whole gamut of diplomatic history, international politics, international organization, international law, and area studies aim to add understanding and solving problem and conflict of shared global communities separated by boundaries of nation states. I hope you understand the significance
basically corruption is widespread and developed in every institution. Corruption harm the economy. For example, if in IR we see the all department also have this problem, this globalization create these problems, it's still the sense of dependency and disappear. Some estimators suggest that the corruption and the inefficiencies caused by corruption is various sectors of the economy, because if a state has a, अगर माशी तौर पे कोई भी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, मजबूत होगी, तो तभी जो है वो बाकायदा तौर पे ग्लोबली वो एक तरक्की कर सकती है. सो इफ़ वी सी द लेवल जो होते हैं इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर लेवल ऑफ एनालिसिस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. सो इन पूरे सिस्टम को समझने के लिए वी विल शिफ्ट टू अवर द सेकेंड लेक्चर. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me, you can comment, or you can text me. Thank you so much, students.